Hi, everyone. Welcome to History on a Plate Talks. Today we have the very monsoony and promising to be beautiful session with Salma Appa, Barkha, Bahar, Aayee, and in her usual poetic manner of rendition, she's going to take us through the monsoons and the celebration of the monsoons in Mughal Hindustan. And I'm not going to take too much time. I will let Appa speak. And once she's done, I'd like to add in a little bit of my understanding of the season as well today. And then we can have questions and answers. And today, instead of, maybe putting your questions on the chat, it would be nice if you could turn your video on, raise your hands, and I'll call out your names. You can turn your videos on and ask Appa questions yourselves. We can make this more conversational. And yeah, I'm hoping you have a cup of chai next to you. If you don't, please get someone to make you one and give you a cup of chai because you will be longing for one once Appa starts speaking about the monsoons. So, okay, we shall begin. Appa, over to you. How about having gut? Can I have chai also? Yes, of course. मैं भिजवाती हूँ. मेरे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम. बरखा बहार आई है इस हवा में, क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें. ये रुत वो है जिसमें खुर्दो कबीर खुश हैं, अदना गरीब मुफलिस शाहो वजीर खुश हैं. क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार. सूरज की जालिम किरणों की तपिश से तंग प्यासी जमीन को जब बारिश की ठंडी ठंडी बौछार सैलाब करती है तो जिंदगी एक नई करवट लेती है. क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या इंसान, सभी खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं आया सावन चूम. हिंदुस्तान की बरसात मशरिक वस्ता यानी सेंट्रल से आए हुए मुगल बादशाहों के लिए एक अजूबा थी. उन्होंने कभी ऐसी घनघोर घटा और बरसात नहीं देखी थी. बाबर ने जब पहली मर्तबा बारिश को बरसते देखा, खुशी से झूम उठा. सूरज की तपिश से निढाल बाबर बारिश की पहली फुहार के साथ आराम बाग का रुख करता, गंगा नदी में जी भर के तैरता, फिर चारबाग के हसीन सब्ज़ार पर बैठ के शराब व कबाब का लुत्फ उठाता और कहता बाबर मैं ऐश कूश के आलम दोबारा नहीं. यानी बाबर ऐश की जिंदगी बसर कर, ये जिंदगी तुझे दोबारा नहीं. हुमायूं भी बरसात के मौसम के आशिक थे. ये किस्सा तो आपने सुना होगा कि किस तरह एक सिक्के ने उन्हें तूफानी नदी से निकाल के किनारे तक पहुंचाया था और इसके एवज में हुमायूं ने उन्हें एक दिन का बादशाह बनाया था और उन्हें सिक्का चलाया था. रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात और फतेहपुर सीकरे से मियाँ तानसेन की राग फजा में गूंज उठी. हिकायत है कि अकबर बादशाह जमुना नदी में रंग बरंगी कश्तियों को बांध देते थे. अब जब तूफानी नदी जोर पर होती वह कश्तियों को खोल देते थे और वो कश्तियां फिजा में लहरों पर डोलती हुई इधर उधर घूमा करती थी और बादशाह उसका नजारा देखा करते थे. अकबर बादशाह का तफरीगाह थी अंगूरी बाग, जहां वो मुसाहिबों के साथ बैठकर शराब का लुत्फ उठाते थे. जहांगीर मदहोशी के आलम में भी एक अच्छे मुसव्विर थे. उमड़ते बादल, घंघोर घटा, बरसती बरसात, लहलहाता सब्जा और फूलों को वो कागज पर उतारते थे. उनके दस्ते मुबारक से बनाए हुए ये नमूने अब भी दस्तयाब हैं, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं जानता सिवाय इन तस्वीर के जो हमें तुज़क़े जहांगीरे में मिलती. शाहजहां लाल किले की सावन भादो रबिश पर बैठकर बरसात का लुत्फ उठाते और जब वो कैद हो गए तो मुसम्मम बिरज से ताजमहल पर बरसती बरसात को देखकर खुश हुआ करते थे. तेज बारिश में नदी में नहाना उनका बेहतरीन मशगला था. तैराकी का सबर उन्होंने अपने वालिद माजिद यानी शहंशाह अकबर से हासिल किया. बहादुर शाह जफर और उसके बाद ही आने वाले मुगल बादशाह बरसात के मौसम के दिलदादा थे.
2000 फुट बुलंदी पर बसा मांडू शहर, जिसका हुस्न बारिश के दौरान और ज्यादा दुबाला हो जाता था, बादशाहों की तफरीह का। जहांगीर का तो कहना था कि बरसात में मांडू से बढ़कर और हसीन चीज हो ही नहीं सकती। नाज हो जिसको बहारे मिस्र शामो रूम पर, सरजमीन हिंद में देखे फिजा बरसात। अब ये तो सामईन ये रहा बरसात और मुगल बादशाहों का छोटा सा जिक्र। अब चलिए जरा सोहेल हाशमी साहब से सुने कि दिल्ली की बहारें क्या हुआ करती। उनका कहना है कि बरसात का मौसम शुरू होते ही पुरानी दिल्ली के लोग टांगों और बहलियों में बैठकर महरौली का रुख करते थे। बैलगाड़ियों और टांगों का ये जुलूस अमरियान और इंद्रियान गांव पहुंचकर दम लेता था, जहां खुली फिजा में लोग बारिश का लुत्फ उठाते थे और आमों का रस दिल खोल कर पीते। सालों कबल ये दो गांव यानी महरियान और इंद्रियान लोगों की सैर व तफरीह का मरकज थे। मुगल बादशाहों के लगाए हुए आम के बागात के झुंड मौजूद थे और दरख्तों पर लगे झूले और सावन के गीतों से फजा गूंज उठी, जहाँ नई ब्याहता औरतें अपनी माँ को आवाज देती थीं कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि सावन आए। मिट्टी के चूल्हों पे गर्मा गर्म पकौड़े, तवे पर सिकते कीमा हरी मिर्च के पराठे, गुलगुले और चाट के कटोरे, दरख्त से टपके आम तफरीह का मजा दुबाला करते। अफसोस अब ये बहारें खत्म हो चुकी, बसे बसाए ये गांव उजड़ चुके हैं, आम के बागात सुपर्द खाक हो चुके। इंद्रियान की जगह छतरपुर मेट्रो स्टेशन ने ले ली है और शोर मचाती धुआं उड़ाती ट्रैफिक ने इंद्रियान को अंधेरिया मोड़ का नाम दे दिया। हिंदुस्तान के इस मौसम से मंसूब छोटी बड़ी कहानियां हैं जो हमें हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों में भी मिलती हैं। शायद आप भी इन कहानियों से आगाह होंगे। वृंदावन के लोग किसान थे, यानी ज़राअत पेशा थे, खेती बाड़ी में रहते थे और बारिश पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार था। वो इंद्र भगवान की यानी बारिश के देवता को खुश करने के लिए उनकी पूजा किया करते थे। भगवान किशन गोकुल में रहते थे और उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की, लेकिन अकल 10 गुना ज्यादा थी। उन्होंने लोगों से कहा, तुम पहाड़ों के दामन में रहते हो, इंद्र भगवान की बजाय पहाड़ों की पूजा करो जो पानी को अपने में समेट लेते हैं। जब इंद्र भगवान ने सुना तो उनका कहर तूफान बनकर फूटा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चुंगली पर उठा लिया। उनका ये अमल 7 दिन तक जारी रहा और वृंदावन के लोगों को उन्होंने बारिश से पनाह। इसी तरह की एक और कहानी भी हमें मिलती है जो भागीरथ राजा की। कहते हैं कि गंगा के पानी की उसे जरूरत थी अपने पुरखों की मुक्ति के लिए, लेकिन गंगा का पानी अगर जमीन पर आता तो वो सैलाब का बायस बन जाता। अब उसने लॉर्ड शिवा की मदद की। लॉर्ड शिवा ने कहा गंगा का पानी जरूर पहाड़ से जमीन पर आए, और उन्होंने अपनी जटाओं में पानी को समेट लिया, दरख्तों और पहाड़ों में समो दिया। इनकी जटाओं से पानी नहर की सूरत में बहकर पहाड़ों से उतरा और राजा ने अपने पुरखों की अस्थियों को इसमें इमर्स किया। ये 2 कहानियां हैं जो मैंने आपको सुनाई, और ये हमें कितना बड़ा सबक देती हैं ये शायद आपने उस पर गौर नहीं किया। पानी के कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर की सतह को ऊपर लाने के लिए हमें पहाड़ों और दरख्तों की बेइंतहा जरूरत, जिसे हम बिल्कुल भूल गए हैं। हम दरख्तों मॉडर्निज्म के चक्कर में हम दरख्तों पर दरख्त काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़े जा रहे हैं और सर्वफलक इमारतें बनाते हैं, हजारों रुपया वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्च करते हैं, लेकिन जो नेमतें और जो चीजें कुदरत ने हमें दी हैं उसका फायदा नहीं उठाते। इसीलिए सैलाब का पानी सड़कों पर तबाही मचाता। आइए अब हम आपको बताएं कि हमारा ये मौसम त्योहारों से भरा हुआ, बहुत तरह तरह के त्योहार हमको बरसात के मौसम में मिलते हैं, और मौसम के एतबार से मनाए गए अनगिनत त्योहार मौसम के हुस्न को और उसकी रंगीनी को उजागर करते। राजस्थान में तीज का त्योहार बड़ी शान से मनाया जाता है। इसे ब्याहता औरतें
اور عصر حاضر میں بن بیاہتا لڑکیاں بھی خوب زور شور سے مناتی ہیں. زرق برق لباس پہنے، ہاتھوں میں مہندی کے گل بوٹے سجائے، پھولوں سے لدے جھولوں کی پینگ لیتی تیج کا تہوار مناتی ہیں. ہر طرف شور برپا رہتا ہے آیا تیج کا تہوار. دراصل تیج کا تہوار ہندو روایات کے مطابق شیوا اور پاروتی کے ملن کا دن ہے. کہتے ہیں پاروتی نے شیوا کو پانے کے لیے 108 سال کی تپسیا کی. کیا صبر تھا. اسی لیے اس تہوار کو بیاہتا عورتیں بڑی اہمیت دیتی ہیں. وہ شیو پاروتی کی پوجا کے بعد اپنے پتی دیو کے پیار اور سلامتی کی دعائیں بھی کرتی. موسم کی مناسبت سے منائے جانے والے یہ تہوار صرف موسم کے حسن کو ہی اجاگر نہیں کرتے ہیں، بلکہ روایتی دسترخوان کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں. حلوائیوں کی دکان پر گیور کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. موتی چور لڈو کے تھال، بیسن کی برفی، ربڑی جلیبی، گرما گرم پکوڑے اور مال پوئے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں. چاٹ کی دکانوں پر گرم گرم مرچ کے پکوڑے اور چاٹ کے کٹورے چاٹ نہ کھانے والے کو بھی اپنی طرف بلاتے ہیں. اسی طرح ہندوستان کے شمالی حصے میں جنماشٹمی کے تہوار بڑی شان سے برسات میں منایا جاتا ہے. بھگوان کشن کا جنم دن. رات کے 12 بجے دن بھر کا فاقہ توڑا جاتا ہے. کھیر پوری، دودھ پیڑا، ساگودانہ کی کھچڑی، مالپوا، دودھ اور گھی سے بنی بہت ساری چیزوں کے پرساد رکھے جاتے ہیں اور بھگوان پر چڑھائے جاتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کے جنوبی حصے کا رخ کریں، یعنی آپ کیرالہ پہنچ جائیں، تو اونم کا تہوار بڑی شان سے منایا جاتا ہے. کہیں کشتی رانی کے مقابلے ہو رہے ہیں تو کہیں ہاتھیوں کے جلوس مندر تک جا رہے ہیں. دکانوں پر کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہیں. کیلے کے تازہ بنے چپس، ABL، گٹو اور بہت ساری مٹھائیاں جو بنی ہوئی ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلاتی. یہ کہتے ہیں کہ اونم میں 21 طرح کی کری بنتی ہے اور 21 طرح کی کھیر بنائی جاتی. میں تو کبھی کیرالہ گئی نہیں ہوں، اس لیے پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی. ہمیں ایک اور تہوار کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور جشن کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے جگنناتھ پوری کی یاترا. برسات کے موسم کا ایک بہت بڑا اہم جشن ہے جگنناتھ پوری کی یاترا، جو پوری میں منائی جاتی ہے. لارڈ جگنناتھ اور ان کے بچوں کی مورتیاں رتھ پر سجائی جاتی ہیں اور اس پر 45 یا 46 فٹ کے پردے لگے رہتے ہیں. رتھ 18 ویلوں کے سہارے چلتا ہے اور پوری سے گنڈیچو مندر تک کا سفر کرتا ہے. ہماچل پردیش کا برساتی جشن منجر ہے، جو چھمبا میں منایا جاتا ہے. یہ 7 دن کا جشن ہوتا ہے اور بارش کے دیوتاؤں کی نذر ہے، جن سے کھیتوں کے لیے اچھی فصل کی دعا کی جاتی ہے. اسی طرح چھتیس گڑھ میں ہریلی کا جشن بھی بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے. یہ جشن بھی اچھی فصل کی دعا کرتا ہے. کسان کھیتوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار گائے بیل کی پوجا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہی سب تو اس کی کھیتی باڑی کے سامان ہے. کھلے کھیت میں بیل جوتنا. کسان آسمان کی طرف دیکھ کے بادلوں سے کہتا ہے، اے بادل اتنا برس کہ میرا کھیت لہلہا اٹھے، میری فصل کامیاب ہو جائے، میں سال بھر خوشیوں کے گیت گاؤں اور تیرا شکر ادا کروں. گوا میں برسات کا موسم سیاحوں کی آمد کا موسم. سمندر میں مچھلیاں بھری رہتی ہیں اور باہر سے آنے والے سیاح سمندر کے کنارے لگے خیموں میں بیٹھ کر تازہ مچھلیوں کے پکوان کا مزہ لیں. دلی میں اندرسا کی بہار. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہاوت ہے، اندرسا کھاؤ جب برسات آئے. برسات کا موسم کیا آیا، کھانوں پر بہار آ گئی. گرمیوں کے بیزار کن موسم کے بعد پھر زبان چٹخارا بھرتی ہے. کلفے اور رائی کا ساگ جو صرف برسات کے مہینے میں پایا جاتا ہے، ان ساگوں کے نئے نئے پکوان بھی بنتے ہیں. لیکن ہم آپ کو تھوڑا بہت ذکر برسات میں آیورویدا کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیجیے، تاکہ آپ جب بارش گھنگھور برسات برسے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. آیورویدا کا کہنا ہے کہ برسات میں زبان ضرور چٹپٹا کھانا مانگتی ہے، لیکن ان کی نصیحت ہے
کہ برسات کا موسم کئی بیماریوں کا بھی گھر ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے آیورویدا کی گئی نصیحتوں پر عمل کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ برسات کے مہینوں میں لیفی ویجیٹیبل اور سیلڈ سے پرہیز کریں کیونکہ ان میں کیڑوں کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کلفے اور رائی کے ساگ کو خوب اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ سبزیوں میں کریلا، توری، لوکی، ٹنڈا، سیتا پھل جیسی سبزیوں کا استعمال کریں کیونکہ ان میں وٹامن، منرل اور فائبر موجود ہوتا ہے۔ موسمی پھلوں کا بھی استعمال مفید ہے، نمک کا استعمال کم کریں۔ وہ غذائیں یا پھل جن میں پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہے ان سے پرہیز کریں۔ لسی اور چھاچھ کی بجائے دہی کا استعمال بہتر ہے۔ مرچ مسالے کا استعمال بھی کم ہو۔ سڑک کا کھانا یا پھل نہ کھائیں۔ کھانوں میں ہلدی کا استعمال مفید ہے۔ خشک میوے جیسے بادام، اخروٹ اور کھجور فائدہ مند۔ یہ تھی چھوٹی سی نصیحت جو آیورویدا نے ہمیں دی۔ اب ہم چلتے ہیں حیدرآباد کی طرف جہاں املی کے درختوں پر بہار ہے۔ تازہ کومل کے پتے جو چگر کہلاتے ہیں کھانوں کو ایک اچھوتا ذائقہ دیتے ہیں اور یہ سبزیوں کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، گوشت کے ساتھ مل کر بنتے ہیں اور مرغ کے ساتھ بھی مل کر بنتے ہیں۔ یہ تو رہی کھانے پینے کی بات۔ چلیے اب کچھ اور ذرا دیکھیں کہ برسات کے موسم میں اور کیا ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں ساون کے کہتے ہیں برسات کا موسم ساون کے گیتوں کی گیت مالا ہے۔ ساون آیا، ہر جگہ موسیقی کی محفلیں سجنے لگیں، کہیں راگ میاں ملہار گایا جا رہا ہے تو کہیں میگھ ملہار کی تانیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں کجری اور جھولا کے بول کانوں میں رس پھول رہے۔ الغرض ہر طرف خوشی اور شادمانی ہے۔ کلاسیکی موسیقی ہندوستان کی میراث ہے۔ اکبر بادشاہ کے مشہور گویے میاں تانسین تو اس کمال کے گائک تھے کہ صرف اپنے گائکی سے کبھی دیپک جلا لیتے تھے تو کبھی بارش برسا دیتے تھے۔ آئیے اس ضمن میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں جو شاید آپ کو پسند آئے۔ بیجو باورا بھی بڑے پائے کے گویے تھے، مگر جب انہوں نے تانسین کی شہرت سنی تو حسد کا پودا ان کے دل میں جاگ اٹھا اور انہوں نے کہا میں جا کر ضرور اس گویے سے ملاقات کروں گا کہ ایسا کیا کمال کا گویہ ہے وہ جو میں نہیں ہوں۔ خیر تانسین گوالیار میں رہتے تھے، وہ چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک تالاب پر عورت کپڑے دھوتی نظر آئی جو گوالیار کے بہت ہی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بھی خوب اچھے صاف ستھرے ہو کر تانسین سے ملیں۔ انہوں نے عورت سے پوچھا میرے کپڑے دھو دو گی؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ کہا کیسے دھلوائیں گے آپ، نیچے کے پانی سے یا اوپر کے پانی سے؟ انہوں نے کہا پانی تو نیچے ہی ہے، اوپر کا پانی کون سا؟ اس نے کہا آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے، باقی مجھ پر چھوڑیے۔ ان کو بھی مذاق سوچا، انہوں نے کہا دیکھو کیا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا میں اوپر کے پانی سے کپڑے دھلواؤں۔ خیر انہوں نے اپنے کپڑے اسے دیے، اس سے راگ چھیڑا اور 5-7 منٹ کے بعد بارش ہونے لگی۔ سورج چھپ گیا، بادل آ گئے۔ بیجو باورا کو بڑی حیرت، عورت نے کپڑے دھو کر ان کے حوالے کیے۔ اب بیجو باورا کو یقین ہو گیا کہ تانسین اس سے بڑے کمال گویے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ ہندوستان کا مغربی حصہ جو ویسٹرن گھاٹ کہلاتا ہے برسات کے موسم میں سیاحت کا بہترین مرکز۔ برسات کے موسم میں سارے علاقے کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کے کسان برسات سے جڑی کہانیوں کا ذکر بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ برسات کے 27 ستارے ہوتے ہیں لیکن صرف 12 ستارے جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں اور ہر ستارہ 15 دن بارش برساتا ہے اور وہ بارش اسی کے نام سے یاد کی جاتی ہے جیسے میگھا رین، پشیا رین وغیرہ وغیرہ۔ ان ستاروں کے ساتھ لوک کہانیاں بھی جڑی ہیں جو کھیتی باڑی سے جڑی ہوئی۔ کسی ستارے کے وقت تو بیج بویا جاتا ہے تو کسی ستارے کے وقت کھیت جوتا جاتا ہے۔ اس کا مفصل ذکر اگر آپ چاہیں تو گوگل پر حاصل کر سکتے۔ برسات بچپن کا بھی ایک حسین زمانہ اور کئی باتیں اس سے جڑی رہتی ہیں جو بڑے ہونے پر بڑی اچھی طرح یاد آتی ہیں۔ کاغذ کی ناؤ چلانا، بارش کے پانی میں جم کر نہانا، اولوں کا مزہ لینا، باوجود اماں بابا کی ڈانٹ سننے کے بچے اپنی حرکت سے باز نہیں آتے
और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। इसमें भी एक सबक पिन्हा है, यानी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, बेचारा किसान और लोग भूखे मर जाएं। ये छोटी छोटी बातें बड़ी सबक आमोज होती हैं और इन कहानियों से जुड़ी रहती हैं। बरसात का हुस्न हर छोटे बड़े के लिए रोमान पर्वत, लेकिन बरसात का गैज़ो गजब नाकाबिले बर्दाश्त। जिंदगी दुश्वार भी हो जाती है, जगह जगह लैंडस्लाइड के हादसा होते हैं, पुराने दरख्त गुजर जाते हैं, सड़कों पर पानी का सैलाब होता है, ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता है। अल्प मुख्तसर, इंसान ने कितनी भी तरक्की क्यों न की, लेकिन कुदरत के आगे वो लाचार है। इसलिए हर वक्त दुआ रहती है कि बरसात का हुस्न कहर बनकर न कभी बरसे, मगर फिर भी दिल यही चाहता है कि रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। हम मुंतजिर रहते हैं, गर्मियों की तपिश से बचने के लिए बारिश का इंतजार करते कि बरखा प्राणी आ जाओ और हमें राहत। ये था बरसात का बयान जो मैंने आपको सुनाया। इसमें हमने कई बातें सीखी, यानी वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र बहुत ही उम्दा तरीके से हमें किताबों से मिलता है और हमें मजहब हमारा सिखाता है। और ये बच्चों का भी जो छोटी छोटी कहानियां बच्चों की लिखी जाती हैं, उनमें भी बहुत सारे सबक पिन्हा होते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। हमको चाहिए कि हम इन सब बातों पर अमल करें और आयुर्वेदा के बताए हुए खानों पर अमल करें, ताकि बरसात के महीनों में हम तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज़। Thank you, Appa. As always, after listening to you, I have a smile on my face. You completely transport us back to another time, a more beautiful, a quieter, gentler, slower time, which we seem to have forgotten in the race of life. I'm But sure you must have enjoyed Barsat when you were young. yes, yes. Dancing outside in the rain, getting wet in the first barsat. So we'll wait for questions. I have many questions on the food aspect of things. And जो आपने जो सितारे mention किए, I've never heard about them. तो उनके बारे में भी सवाल है. But while we wait for your questions, I just want to talk about my understanding of a few things around the monsoons, which I've read over the last year, primarily because I'm interested in knowing, why we eat the way we do in these months. So there are three things. Okay, so one is what our Puranic texts tell us, and mythology tells us. The second is the fact that we were a largely agrarian society back in time, and the third is Ayurveda. So these are the three factors which I've studied and sort of put together. So according to Hindu mythology and the Puranic text, this period, or the period of the rains, the Varsha Ritu, falls in what is known as the Chaturmas. Chaturmas is four, Chaturthi का जो चार है, and Mas is month. So we are in this Chaturmas period, which starts, on the Ekadashi of the Ashad month, which is this year on the 20th of July, matlab on Tuesday. It's going to start on Tuesday, and it ends on Kartik Ekadashi, which is in October. And in these 4 months, it is believed that the gods, particularly God Vishnu, goes into a meditative state. He goes to sleep, because it is said that one year is one day for the gods, and this is the time when they rest, they meditate, they sleep. And while the gods are sleeping, what happens is that the tamas guna, the sattva guna, the rajasic guna, and the tamasic guna, it is believed at this time, the tamasic guna in the world, in us and in the world around us, increase. Tamas बढ़ता है, and hence we have two things. Okay, hence we are supposed to eat food that is sattvic. That is one side of it.
and we are also supposed to do things which reduce the tamas gun and increase the sattva gun. And that includes meditation, it includes prayers, it includes festivals. Which is why in this period, you will see from July, from the end of July to the end of October, you have all your major festivals. You know, you have your Dashera, you have your Diwali, you have Janmashtami, you have Ganpati Puja, all of these festivals at this time, because you praying, meditating, looking inwards, connecting with the gods is your duty at this time, you know, because it increases the sattva guna in the world at a time when the gods are asleep and tamas is rising. How this plays out in agriculture is in, you know, in like imagine an agrarian society. Sorry, imagine an agrarian society. This is the time of the year when you know, farmers have the time to sit back and do things other than toil, right? Because their crops are getting water. They are not harvesting, they are not planting, they're not fertilizing. So this is the time, they have time at this time to do all of this reflection, to meditate, to celebrate. To otherwise, if you're a farmer, you're working every single day. When do you have the time to celebrate, right? So that sort of feeds into this entire thing. At the same time, if you are fisher folk, for example, you're not fishing at this time because the seas are rough and choppy. So again, you have time to indulge in these activities. Okay, so that is looking at the practical aspects of these things. Again, Ayurveda also comes in. Now, according to Ayurveda, this particular Ritu, the Varsha Ritu, is when the Agni, what is our Agni is at its lowest. Now, Agni is our digestive fire, and Ayurveda believes that this is the time when the digestive fire is at its lowest. You know, it's highest in the winters in Hemant, but right now it is at its lowest. So the food that you eat has to be food that is easily digestible. Okay, so you're supposed to avoid meat. You're supposed to avoid fish because these are supposed to be heavy. Um, and what this also ties in with is the fact that this is the breeding season. You know, fish are breeding at this time. Animals are multiplying at this time. So kill, you do not fish, you do not kill animals at a time when they are multiplying. So all of this ties in. Of course, there are various other things, you know, and it's not just in Hinduism or in you know, our Quranic text, but we also find instances of similar practices across other religions like Buddhism and Jainism. You have Paryushan, which is a month of abstinence in Jainism, and the Jain monks practice it very seriously. At the same time, in Buddhism, you know, you have a Vasa, or Vasa, which comes from Balsha. And this is a period of 3 months when Buddhist monks um, stop and you know, they rest at one particular place. They don't move around. Instead, they meditate and they give sermons. And it is for this reason that you have all the Buddhist caves around the country. And if you see, those caves in their architecture and in their making are you know, made are conducive to meditation and sermons. Like you will have paintings and you will have sculptures of stories from the life of Buddha, so you can reflect upon those. And very often you will see these sermon halls where the monks can give sermons. So this was also at this particular time. The monks would not walk about because you know, walking, there's so many insects and there's so many animals that walking and trampling on them could kill them. So all of this ties in together, multiple things, but it's just such a fascinating study if you look into it, and I just wanted to share that. And that's it. I think we're open for questions. Um, Well, okay, I have one question. Jyoti is asking, I mean, she would like to know what food I think she means the Mughals, but उसमें nuggets आ गया है. What food did the Mughals eat in the rain? I think they drank lots and ate less. They got drunk, and I think they were not bothered about the food.
but they did not change the food part. They had the non-vegetarian diet as usual, and not they enjoyed that during because in summer they had abstained from the mirch masala and all that, and as such the food was not mirch masala. They did not have any spices. It was only grill food, which was healthy. It was only tandoori food, which was healthy also. But otherwise, I think they did not believe in Ayurveda, and they did not listen to Ayurveda, that they have to have a fresh food, because they always got fresh food. They never ate the subsidies, but enjoyed the non-vegetarian food. But as Shubhra has said, that one must avoid fish, and I'm sure they did avoid, because it is the mating season and we should not disturb them. So I will say that Mughals enjoyed more drinking and less eating, but the food remained grilled, tandoori, and less spicy. So they did not fall sick. ओके, तो मतलब बेसिकली उनके खाने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं, उनके पास मसाले ही नहीं थे, तो वो क्या डालते? ये तो मसाला हिंदुस्तान की देन है जो बाद में उनको मिला। जी। And what about, agar, matlab, we hear, and you've also spoken about the Hakeem, and their recommendations of what has to be cooked and what should be. The Hakeem used to give them recommendation because, and then as Ayurveda also says, that the seasonal fruit, they used to have lots of sharbat with the seasonal fruits, and they were very fond of cut fruit also. And they used to have, even today, if you go to Central Asia, the first thing you will see is a whole bowl full of the fruit which you are given to enjoy. And they had the Hakeems who told them that in this season what to eat and what not to eat. Right. And what about the awam at this time, Apa? I mean, if we look back, मतलब markets में क्या मिलता था और लोग क्या खाते थे? जैसे आपने कहा कि picnics पे जाते थे, but do we know what was eaten by the common people? Picnics पे जाते थे, ये तो हमारा दिल्ली की बहारें हैं जो हमें सुनील हाशमी साहब से मिली, और मैंने कहा कि उसमें हम पकौड़े खाते थे, कीमा भरे पराठे होते थे, और उसी के साथ साथ चाट के कटोरे होते थे, और मालपुए होते थे, और इसी तरह की चटपटी चीजें होती थी, क्योंकि गर्मियों से भी हम बेजार हो चुके थे, एंड वी wanted to recover from the very, very dry food which were eating the whole summer. And that is how the Amriyan or Indriyan, jahan baag lage hue the, they used to enjoy the time. And I made one of the old hand, that is Professor Azhar, who was a professor of Persian in Jamia in Jawaharlal Nehru University. And he also narrated the same story, that we used to lado things on our belgadi at Tanga and reach Mehroli. And वहाँ जाकर के हम झूले डालते थे, खाना पकाते थे, चूल्हे बनाते थे, और पूरा दिन गुजार कर पिकनिक के बाद वापस आते। मगर अब कहाँ वो बागात ही नहीं है, जैसे कहा कि मेट्रो स्टेशन खड़ा है और अंधेरिया मोड़ पर ट्रैफिक घूम रही। अरे ये सॉरी मेरा माइक ऑफ था। मैं उस समय को imagine, I was trying to imagine that time. Tanushree has raised her hand. Tanushree, would you like to turn on your video and audio and ask Appa a question? आपा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छी तरह। मुझे आपसे आके मिलना है जी। और तुम्हारा हाल क्या है तनुश्री? मैं ठीक हूँ। नहीं आपा, जब आप कह रहे थे मेहरौली के बारे में कि आम के बाग जाते थे और लाल किले से, तो सवाल, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, पर मुझे याद आया कि एक छोटा सा पोएम है जो वो सैरे गुलफरोशा के बारे में लिखा गया था, और हमें पता नहीं कि किसने लिखा था, पर 4 लाइनें मुझे याद है। मैं आपको सुना देती हूँ, और उससे पता चलता है कि क्या माहौल बनता है। हथखुल्ला क्यों खरोशा है, आज क्या सैरे गुल फरोशा है,
فتح کیوں خروشہ ہے, کیا آج کیا سیر گل فروشہ ہے, پہلیوں یکو کا ایک تاتا ہے, جس کو دیکھو وہ کتب جاتا ہے. مجھے اس کے آگے وہ یاد نہیں ہے, but that particular poem also talks about the میلہ in مظفر محل کے باہر. سیر گل فروشہ پھول والوں کے. ہاں, اور اس میں ایک جو کھانے کا جو ڈسکرپشن ہے اس میلے میں, اس میں مالپوا, جلیبی, پیرز, آم, سیب, ان سب کا ذکر اس میں ملتا ہے. These are the fruits you get to hear about it. That's what I wanted to share. Thank you, Shubhra, and thank you, Appa. It's Thank you always so much. amazing Thank you listening so to much you. for sharing. I'm so happy. Thank you so much for sharing that, Tanushree. That was lovely. If anyone else, everyone's quiet today. Sadaf is not saying anything. I'm surprised. So if anyone else would like to ask anything, please do, because as you know, conversations Say with Appa something, always. say something which can increase our knowledge also. I'm sure Yes. they must be having some kind of a story with them. So Appa, Jyoti पूछ रही है that she would like to know the story of एक दिन का बादशाह, if possible. एक एक दिन दिन का का बादशाह. बादशाह तो हुमायूं को जब सिक्के ने तूफानी नदी से निकाल के किनारे पर पहुंचाया, then he asked him that what can I give you? I will make you king for one day. और उसको एक दिन का बादशाह बनाया, और उसने बादशाह बनते ही चमड़े का सिक्का राइज किया, और उसको कहते हैं सिक्के का सिक्का. सिक्का मीन्स कॉइन, सिक्का मीन्स वाटर बेरर का कॉइन. तो वो एक दिन का बादशाह बना था, और उस बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और उसको एक दिन की बादशाह दी. मगर ये उसके बचाने का, नदी से निकालने का इनाम था जो हुमायूं ने उसे दिया था. How interesting. That would anyone want to know any other stories? Please ask away. I'm surprised that people are quiet today. Usually, बहुत सारे सवाल होते हैं. Appa, tell us a little more. आपने ये mention किया when you were talking about the Western Ghats about the sitaras. आप एक ये बार मैंने भी during my research I came across, because I had also not heard about it, कि ये मगरिबी घाट में, I will do more research on it, and they say there are 27 stars, out of which 12 जो है वो बारिश से they are connected with the season and they वो बरसाते हैं, और हर स्टार का एक 2 हफ्ते होते हैं. 2 हफ्ते एक सितारा जो है वो बारिश बरसाता है, और उसी के नाम से किसान उस बारिश को जानते हैं, और उस बारिश के अलग अलग किस्से होते हैं. यानी 1-2 हफ्ते के अंदर खेत जोतना होता है, फिर दूसरा सितारा आता है जो 2 हफ्ता बारिश बरसाता है और उसमें बीज बोना होता है, फिर 2 हफ्ते के बाद और दूसरा आता है जिसमें और दूसरे खेत के काम होते हैं. तो इस तरह ये 15 सितारे जो हैं 2-2 हफ्ते के हिसाब से, यानी 7 दिन, 1 हफ्ता उनको लगता है, और ये different kind of things are done in the for the better crop and harvesting in the field. fascinating. I had also not heard about this star, but अब मैं जब वेस्टर्न घाट जाऊंगी तो I'm going to find out from the villagers that what the stars are. Very interesting. It's almost like a farmer's almanac, you know, stars को देख के deciding at what time what should be planted or harvested. Fascinating. Okay, so Arzu Putri Appa, can you tell us a little more about the Hyderabad bit? I mean, Hyderabad mein, if there are any incidences that you know of food or celebrations. जैसे मैंने कहा, इमली के पत्ते जो हैं वो खानों में डाले जाते हैं, गोश्त में डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, और उसको चुगुर कहते हैं. और चुगुर जो है इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ खट्टा जायका खाने को देता है, और हैदराबाद के खाने तो वैसे भी खट्टे हुआ करते हैं, मगर ये चुगुर का खटास जो है ये बिल्कुल अलग तरह का होता है. और ये चुगुर के पत्ते आपको वहीं मिलते हैं. मैंने यहाँ कोशिश की थी हमदर्द में, हमारे वहाँ एक इमली का दरख्त था जिस पर से हमने कुछ पत्ते निकलवाए थे, मगर वो मजा नहीं आता है जो वहाँ के पत्तों में. अच्छा, और ये मतलब मॉनसून में ही होता है ये चिगुर के जो. जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने एक रेसिपी बनाई है हैदराबाद में नहीं, ये हमने विशाखापट्टनम में बनाई थी, आंध्र प्रदेश में.
उसको भी मतलब चिंता चिगुरु मतलब छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, टेंडर लीव्स ऑफ चिगुर, हाँ उसके साथ पकाया था प्रॉन्स को। तो वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा होता है प्रॉन्स के साथ पकाओ उसको। जी, चिंता चिगुरु। और उसको फिर पत्तों में रैप करके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओडिशा में जैसे पोड़ा करते हैं ना, वो कोल्स में उसको घुसा देते हैं उसको, एंड इट्स कुक्ड लाइक द इट कुक्स इन अ पार्सल ऑफ लीव्स इन एम्बर्स. So it's a very interesting dish which has, in which you see these the influences of Odisha also coming in the way of cooking, the pora जो होता है. So yeah, yeah, we've done this in Visakhapatnam. The लोग this thing folk songs also बहुत सारे हैं हमारे. एक तो हमको वो याद आया कि जब शादी होकर लड़की जाती है और सावन आता है तो वो कहती है नीम की निभोली पक्की सावन भी कभी आएगा, जीवे मेरी माँ का जाया डोली भेज बुलावेगा. तो how after getting married you think of your parents' house and then you yearn to go there and then you want to be with the family again from where you have come. और ये आवाज लगाती है और अपने भाई को बुलाती है, जीवे मेरी माँ का जाया डोली भेज बुलाएगा. और मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ तो नीम की निबोली इतनी गिरी पे मुझे मिलती है सन सिटी में, और मैं कहती हूँ कि यही नीम की निबोली को देख के उसने गाया होगा. Beautiful. Appa, एक और I think Ali has raised her hand. So Ali, would you like to turn your video on and ask anything? हेलो एवरीवन, आई वोंट बी स्विचिंग ऑन द वीडियो. मैं वही बात करने वाली थी. बारिश का जिक्र हो रहा था और आपा ने खुद ही फोक सॉन्ग या गाने का जिक्र किया. यहाँ औरतों बरसात में औरतों के सेलिब्रेशंस अलग से होते हैं, जिस तरह से कजरी गाई जाती है. और मैं जानना चाह रही थी, यहाँ पे रीजनल कुजीन के जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा एक महफिल जमी हुई है. सो इफ एवरीबडी कुड tell if they want to tell a little bit about how it is celebrated in their region and the folk music associated with it. खाने का तो जिक्र हो ही रहा है. खैर, जैसे मैंने कहा कजरी गाई जाती है. कजरी चिवला, हाँ कजरी तो बहुत अच्छे से गाई जाती है और हर जगह गाई जाती है. But that's a very interesting suggestion from Ali. So if anyone would like to talk a little bit about what is cooked specifically in their part of the country, it's a great opportunity to talk about these things. We have the time, so we can do that. Ria is asking, Appa, are there any monsoon specific recipes and dishes? Ria, is this are you speaking of a particular time or place? Are you asking about the Mughal Sultanate? I'm just trying to understand what part of the country you are alluding to, or of the Mughals that the Mughals ate. Are there any specific? Okay, Appa, sorry, we were talking about the fact that they used to drink more than they ate, but was there anything specific that they ate at this time? Anything that you know of? See, they used to have mostly ash. Now, ash is we can call it in modern language soup. But it was not a kind of a soup which we take now. They used to have a ash in which they used to use the seasonal vegetables, and they also used some of the meat also in that, and they used to eat it with naan. Okay. The ash was the favorite of the during monsoon, and they enjoyed it because it was healthy, it was filling, and it was advised by the Hakims also because it has little bit of not much but little bit of the either chicken or meat and lots of vegetables in it. Okay, that's interesting. Ash, I mean, from what I understand, is a soupy kind of. I mean, if you have to compare it to what is made now, it's you can call it a sort of a soup with vegetables, meat, soup sometimes vegetables and drink it. But they used to eat it ash with naan.
Acha. We Right. will So have almost like a stew. it was like a meal. Right. It Okay. was So one that's pot meal. the real thing. So yes, they did have vegetables after all. So भी आँच में जो disguise होके vegetables जाती थी. See, the local products were always used, and they had vegetable. This is a wrong concept that the Mughals never had vegetables. No, Akbar Badshah was vegetarian all the time. He ate meat very reluctantly because he said that he has to run the kingdom. That's why, for the energy, he eats meat. Otherwise, he was very happy with the vegetarian dishes. And if you need Aayee Akbari, you will find that the food of Akbar was divided into three parts. One part was complete vegetarian, and second part was meat cooked with grain, and third part was meat cooked with little bit of spices, whatever they had, which we call today do pyasa. So vegetables were there. They were fond of dal also. Pahid is a dal which you will find in Aayee Akbari. This was cooked. And in Bahadur Shah Zafar, moong dal, it was called dal badshahi. So they had dal also, and they had the pulaus also, which were, some of them were vegetarian. Like they had lots of use of the chickpea, kabuli chana. They were healthy things, and they had the backing of the Hakim also, which we rushed to the doctor to find out the diet chart. So they had their own diet chart, and then the all dietitian who told them what to eat, what not to eat. As Ayurveda says, that all your three gunas should be in balance. If that balance is not there, you fall sick. And this was very important either for the Hakim or for the Vaid, or even for homeopathy, that your balance of hormones remains incorrect, in order. Right. Appa, is it true that Aurangzeb was vegetarian? Jyoti is asking. क्या? औरंगजेब जो थे वो वेजिटेरियन थे. ये पढ़ा है लोगों ने. ये is this true? The good old days जब खेती बाड़ी शुरू हुई तो see they did not have the fowls, they did not have the sheep. ये तो बाद में जब एग्रीगेट हो गए, वो खेती बाड़ी करने लगे, जानवर पालने लगे, तब उन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया. तो उससे पहले तो उनका गुजारा वेजिटेरियन पर ही हुआ करता था, बिकॉज खेती बाड़ी से ही जिंदगी शुरू. नहीं नहीं, she is asking about Aurangzeb. Oranges? औरंगजेब जो औरंगजेब आपा औरंगजेब जो थे ना. औरंगजेब was पक्का vegetarian. Aurangzeb used to eat meat before he became king. But when he became king, he became emperor, he gave up eating meat and he ate vegetarian food. उसकी मशहूर एक खिचड़ी है जिसको हम कहते हैं कुबूली. And he was very fond of that khichdi. Like Jahangir was very fond of another khichdi which he ate in Gujarat, and it was called Lazizan. So Aurangzeb was purely vegetarian, and he did not eat luxurious food at all like other Mughals. No, he ate very simple food, and he earned his livelihood also by writing Quran. And that is why he never wore all those luxury things which the palace should have. He never had any concubine also. He was a very simple and very religious man. Right. Okay, Shaila is asking Appa, were there any festivals during the monsoons which were celebrated by the Mughals? No, there was no festival. They enjoyed the rain, bus, and they got drunk. Because whatever I read, Jahangir got drunk, but he used to do the paintings. Akbar got drunk and Anguri Bagh mein baith gaye aur tera kare. Swimming was the very, very popular occupation of theirs. They used to be very, very happy when they were in the river. And the same Babar was there. He used to swim also. And they all had fun.
Very interesting, Appa. It's actually very interesting that there is they didn't have any festivals, matlab, at all that was celebrated at this time, while the rest of the country was celebrating so many वो things. तानसेन से तानसेन की सदा बुलंद होती थी और वो राग मियाँ मल्हार गाया करते थे बैठकर और बादशाह सुना करते थे अपने मुसाहिब के साथ. Right. Or okay, Arzu is asking, Appa, is it possible that seasonal eating was adopted later? She's talking about the Hyderabad's food relationship with the chigur. Once the Indian beliefs were stronger, like पहले उतना नहीं होता था seasonal eating. पहले ज़्यादातर like you were saying वो grilled meats खाते थे. और जो seasonal खाना है that came to be adopted as they spent more time in Hindustan and adopted the customs, so to say, and See, gradually Mughal kings they had become Indian, and the habits also, because they were meeting local people also. दरबार में local लोग भी रहते थे, and they, as they say that after Babur and Humayun, तो of course India में रहा ही नहीं, बहुत कम रहा. फिर जहांगीर के दौर में भी they had become Indianized. आप अगर उनके उस जमाने की मैन्युस्क्रिप्ट देखें तो उनमें आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जिनका जिक्र मिलता है उसमें. और अकबर ने तो बहुत सारा हिंदुस्तानी खाना शुरू कर दिया था अपने टेबल पर, खांडवी वगैरह, पूरी कचौड़ी, ये सब कुछ मिला करती थी. और उसके साथ साथ लोकल वेजिटेबल्स का और लोकल चीजों का इस्तेमाल भी वो किया करते. Okay. Sadaf का एक सवाल है आपका. He's asking, were there specific foods and music that Mughals and pre-Mughals had during the monsoons, apart from Miya Ka Malhar? मियाँ का मल्हार के अलावा they used to enjoy कथक, the dance. कथक डांस भी हुआ करता था. रक्स सुरूद की महफिलें जिनको हम कहते हैं, और भी राग वो गाया करते थे मियाँ तानसेन के अलावा भी. और दूसरे गवैये भी होते थे दरबार में जो कि गीत गाया करते थे और बादशाह से इनाम पाते थे. और मियाँ तानसेन तो खैर कमाल के गवैये थे और वो बाहर ही बैठकर फतेहपुर सीकरी में गाया करते थे. मगर इसकी कथक की महफिलें होती थी, कथक नाच हुआ करता था और जिसका वो मजा लेते थे. और उसके बाद दूसरे गवैये दूसरे राग भी गाया करते थे. I won't be that much to tell you about the ragas because I haven't studied much of the classical music. Okay. And okay. Oh wow. So Bendo has a question. Is there any influence of Bengal on the food of the Mughal Badshahs? बंगाल का तो ऐसा कोई, इन्होंने बंगाल को अपना असर दिया है, मगर बंगाल के खाने पर मुगलों के खानों का बहुत असर है. They have influenced the food of Bengal instead of Bengal giving them any influence. No, the Mughals gave them because they ruled Bengal. और उस जमाने में बंगाली खाने कुछ ऐसे मशहूर हुआ करते थे, मगर इन्होंने मुगलों ने अपने खाने वहाँ दिए जो आज भी आपको मिला कर. Right. Okay. Mughal influenced the food. They influenced their food. Bengal did not influence Mughal food. No. Right. Great. Are there any questions left? Is there anything I missed? Jyoti would love to know the recipe of kabuli if it's available. Jyoti, there are lots of recipes of kabuli that you find online. There दो अलग-अलग है. एक तो वो जोधपुर की. It is a चने दाल का पुलाव. जी. Cooked like a biryani only. चना दाल है, इसको आप रात भर भिगा दीजिए और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर उसको उबालिए. बट इट शुड नॉट बी मशी, खड़ा खड़ा होना चाहिए. और ये हरे मसाले में और उसके साथ दही में इसका मसाला भुना जाता है. अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, पुदीना उसमें मिलता है. ये एरोमेटिक बिल्कुल नहीं होती है, इसमें ना ज़ाफ़रान पड़ता है, ना केवड़ा पड़ता है, ना खुशबू होती है. उसके बाद जब आपकी इसमें मगर पड़ता है एप्रिकॉट काट कर, इसमें पड़ता है ड्राई प्लम्स जो खट्टा होता है, मीठा वाला नहीं. इसमें पड़ती है किशमिश और इसमें पड़ता है नींबू का रस. ये पुलाव जो है वो खट्टा मीठा है, विच इज आई थिंक ईरान फूड इज खट्टा मीठा एंड दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ द इरानियन डिशेस. और उसके बाद आप
चावल उबाल कर उसकी तह लगा दें चने दाल की, जिसमें आपने ये सब डाला है ड्राई फ्रूट, और ऊपर से, और हर बार जब आप तह लगाते हैं आपको हरी मिर्चा डालनी होती है, और पुदीना काट के बारीक डालना होता है, धनिया काट के डालना होता है, फिर उस पर चावल डालिए, फिर ऊपर से आप घी थोड़ा सा डाल करके और दम पर छोड़ दीजिए, आपकी कबूली तैयार। मुंह में पानी आ गया। आपने फटाफट रेसिपी बता दी. I will be sending the recording, so all of you can go back and write the recipe if you want, as Appa has narrated it. But एक जोधपुर में भी एक कबूली पुलाव मिलता है, which is believed, हाँ, to have been influenced by the Kabul का. कबूली खाई जाती है इसलिए कि ये जैसे नजर के लिए पकाई जाती थी पहले, और जी. हो हम्म. आप लोगों के यहाँ होता है कि प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो इसलिए हैदराबाद में इसका नाम पड़ गया कबूली। कबूली, राइट. तो हाँ, वो और है। काबुली जो जोधपुर, और उसमें ओरिजिनली जो काबुल में पुलाव बनता है उसमें तो मीट डलता है, बट जोधपुर में जब आया तो गट्टे, होता है। हाँ, तो गट्टे डले क्योंकि वो वेजिटेरियन, इन द वेजिटेरियन द रॉयल families, or I'm not sure whether it was the royal family or the kitchens of the awam, because Rajput तो खाते हैं meat, but गट्टे डलते थे instead of meat, and now that the gatte has been replaced by fried bread. So interesting story there also. खाना है no end, you know. Yes. Okay, so Das is asking one more question. Were there any specific kind of guests who used to visit Mughals during monsoon to enjoy Indian weather and hospitality? No, I was reading her question. She was asking about the Shaban Shah Jahan was in jail. What did he eat? Right. When Shah Jahan 60s. was in jail, he was asked to give option of one grain. Jahara Begum, who was the vice Shahzadi princess, she says that opt for chickpea, and he opted for chana because chana can be made in 1001 ways. चने का पुलाव है, चने का हलवा है, चने की रोटी है, चने की दाल है. So he opted for chana, and it was cooked in different ways, and he was given one grain, and that was chana. Right. What Sadaf is asking, Appa, is did he eat pakoda or anything else during the monsoons and barish? Since he picked chana, चने का कुछ मतलब पकौड़े भी खाते थे क्योंकि वो बेसन बनता था. हम्म. बेसन जो बनता था, तो आई डोंट नो अब बनता है या नहीं, घरों में तो बनता है अभी भी. बेसन घी में भून कर थाल में जमाते हैं और उसके काट करके और उसको खाते हैं. इट इज बेसन, ऊपर से बघार देते हैं उसको बहुत अच्छा. जी. और लखनऊ में उसको उल्टा पुल्टा कहते हैं. हाँ, उसको भोपाल में बेसन मतलब कंडैया कहते हैं. इट इज वो थाल में काट के फिर बघार, और या इंटरेस्टिंग, आई हर्ड ऑफ दिस, बट डिश ऑफ बरसात. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. But did Shah Jahan eat pakoras? Is there anything of so? Pakoras were not there. They used to have mostly grilled food. Fried food was very little. Kebabs were also pan fried. They were not deep fried. और या तो सीख कबाब होते थे, वो अंगार में पकते थे, तंदूर में पकते थे, but fried stuff was not there. Okay, interesting. अच्छा, ऊपर के थोड़े और सवाल हैं. I'll just go back to them. हाँ, तो सदाफ का ही सवाल है. He was asking, were there any guests who used to visit Mughals during monsoons to enjoy, the Indian weather and hospitality? ऐसा कुछ कहीं पर कुछ जिक्र नहीं, because the foreigners used to come to Mughals, but not maybe they came to enjoy the monsoon rain, but we don't find any references of them in the books or in the manuscripts. Okay, all right. Okay, Mino has another question. Are there any local foods
or recipes which were not Mughal per se, but now are known popularly as Mughal food? I think कई सारे हैं ऐसे. बहुत सारे हैं, बहुत सारे कबाब है, कौरमा है, कलिया है, दो प्याजे हैं, पुलाव है, एंड हलीम है, शबदेग है, बहुत सारे हैं. Right. Ali का सवाल है आपा. Are there any records of how royal women celebrated monsoons? Did they have any specific rituals or anything of the sort? How women celebrated. तो गुड ओल्ड डेज तो झूले की पेंग पर वही बैठती थी और कजरी गाती थी और झूला होता था. एंड देयर इज अ स्पेशल फेस्टिवल समवेयर, आई थिंक आई रेड दैट विच इज ओनली सेलिब्रेटेड. तीज का त्यौहार भी औरतें ही मनाती हैं. एंड इन कर्नाटका आई थिंक इंटीरियर में देयर इज अ फेस्टिवल इन मॉनसून in which the women used to plow the field. Okay. खेत जोतती थी. But just one line this thing, so I thought maybe it was not very authentic to talk about. Right. And what about the royal women? जो queens थी, उनका कुछ specific monsoon ritual हुआ करता था उसमें? हरम में ही मनाती थी, मेहंदी लग जाती थी, कथक के डांस हुआ करते थे, वो भी शराब में मस्त हो जाती थी. और मे भी गंगा किनारे या जमुना किनारे बैठ करके वो कव्वालियों से सुना करती थी. और हरम में भी कुछ औरतें थी जो कि गीत गाया करती थी, फोक सॉन्ग्स होते थे. सो बट द लाइफ यूज्ड टू रिमेन लिमिटेड टू द हरम. Right. Yes, Sadaf. Everyone was fond of their drinks, it seems. They were very fond of their drinks, yeah. Yes. Okay. This is something we've discussed a number of times before, Appa, but ये favorite सवाल है, हर बार एक बार आता है. ज्योति पूछे, ये दो प्याजा आपने जो मेंशन किया उसका नाम कैसे पड़ा? I know you दो प्याजा का उसकी कहानी आपने पहले भी बताई हुई है. If you could just मुल्ला तो हाँ जी. मुल्ला जो थे वो आगरा के नजदीकी गांव में रहते थे और उनके फादर जो थे he was a teacher and he wanted Mullah to be also get education and also become part in the school or become a teacher or somewhere. But Mullah was a very ambitious boy and he had no interest. उसने पढ़ाई लिखाई तो कर दी पर he used to dream that एक दिन मैं जाऊंगा आगरा और एक दिन मैं जाऊंगा महल में और एक दिन मैं नौकरी करूंगा और बादशाह को देखूंगा. And everybody used to think he's a fool. अरे कहाँ जाएगा तू, अरे कैसे जाएगा तू. But somehow when he grew up a little more, he went away to Agra. And in Agra, he was lucky enough to find somebody who took him to the palace and gave him a job. He was very happy when he was told that he will work in the palace. But when he went to the palace, he was very disappointed because the job which he was given was in a poultry. And he said, my God, मैं इतना पढ़ा लिखा और मैं इतना अच्छा दिखने में और मुझे दिया काम पोल्ट्री का. But he was determined and he said, no Mullah, don't get upset. This is the beginning of your life. And he continued with the poultry. After a year, the reports went to the king and the Badshah realized that अकबर ने देखा कि पोल्ट्री का खर्चा तो बहुत कम है. He got very upset and he called the दारोगा और उनसे कहा कि how come the poultry expenses are very very little. तो बुलाओ कौन है. अब दारोगा बावर्ची खाना भी बहुत डरे कि नया लड़का है, पता नहीं क्या करा है. उसको बुलाया. मुल्ला आए, पूछा गया कि मुर्गियां मर गई या जिंदा है. तो बोला सरकार please send somebody to check. All the poultry is really very very good. Fine. Somebody went to check on the poultry. के वापस आके बोला कि मुर्गियां तो दौड़ रही है, बड़ी हेल्दी हो रही है, कोई भी बीमार नहीं है. बादशाह ने कहा क्या करा तुमने. बोला सरकार आपका खाना जो आता है आप तो थोड़ा खाते हैं, बाकी वापस जाता है, मैं वो खाना समेट लेता हूँ और मुर्गियों को खिला देता हूँ. तो जाफरान और ये सब खाएंगी तो मोटी तो होंगी. तो
Basha was very happy. And Akbar Basha says, अच्छा पढ़े लिखे हो? He says, yes. So he said, अच्छा अब तुम कल से नौकरी करोगे लाइब्रेरी. The mullah was very happy that he will be in touch with the books and all. But no, he was told that all the manuscripts which are handwritten and all the books which are handwritten, you will chadao cover on them. Now he was again disappointed, but he said, no, mullah, don't worry. You will go further. After some time, again the accounts were checked and they realized that this was a zero account. What he did now, he was called that now what have you done? He says, सरकार आपके यहाँ जो दरबार लगता है तो मुंशी जो है लोगों की कंप्लेंट्स लाता है और पढ़ते हैं. ये कंप्लेंट्स जो हैं बहुत मखमल के कपड़ों में होती हैं, टाफिता में होती हैं, साकिन में होती हैं. वो निकालता है मुंशी, वो पढ़ता है, आपको सुनाता है, वो कवर फेंक देता है. मैंने वो सारे कवर जमा करे, आपके दर्जी को दिए, उनको नाप दिया और उनसे किताबों पर कवर चढ़ाए. तो मेरा खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे लिखूं? The king was very happy and मुल्ला was taken into the दरबार and मुल्ला की दुआ कबूल हुई और मुल्ला जो है दरबारी बन गए. अब मुल्ला खाने पीने के शौकीन थे. हर जगह जब दावत हो मुल्ला पहुंच जाते थे, बुलाए जाते थे और मुल्ला कहते थे आज दो प्याजा तो पका होगा. अच्छा वो इतनी बार दो प्याजा की बात करने लगे कि उनका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा. तो ये छोटी सी कहानी जो मैंने पढ़ी मैंने आपको सुनाई. I love this. I love this particular story. Okay, Jyoti has also raised her hand to ask a question. Jyoti, would you like to turn your mic on and ask? Can't hear. Jyoti, are you there? Okay, I don't think Jyoti is turning her mic on. Okay, we'll go to Sada. Okay, so that is asking Apa, did Mughals or any other ruler ever have rules regarding war and food in monsoon? For example, rulers won't fight in a war or they will eat a particular kind of food during war in the monsoon. मुगल का बावर्ची खाना, the kitchen of the Mughal used to travel with them. And the kitchen staff and everything, they used to reach the destination much before the king, where he has to enter into the war field. And I have a book called Emperor's Table. At the back of it, I have described that how the kitchen used to move. The kitchen used to move, खैमा लग जाता था, उस पर म्यूट्स पर सामान जाता था, एक खाने के लिए एक कुक अलग अलग जाता था और ये पूरा एक खैमा लगता था जो कि इनका किचन कहलाता था और उसमें खाना पकता था, वही खाना जो बादशाह महल में खाता. The same food was cooked in the war camp and it was given to the king. And the same cooks used to come and the hakim used to come with them. So as it is said that the kitchen of the Mughals moved with them. Right. Wherever they went. Even the water bearer, because Akbar used to drink only Ganga का पानी. उस जमाने का गंगा का पानी हेल्दी था, पर आज करना पिए. And the water bearer used to reach earlier, so the water remains available for the king. And Jahangir का भी यही था. He used to drink गंगा का पानी and the water bearer used to go with him wherever, even the short distance. Right. But Appa, ये ऐसा so monsoons में भी अगर if they go to war, the food used to be exactly what they would eat back in the palaces. And there was never anything like monsoons में war नहीं होगी, like they won't fight in the monsoons. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता था जब, मगर you know monsoon में it was avoided. They will never, because see the Mughals were the conquerors. They wanted to conquer and they would wait for this good season to come
where they will not face any defeat. They Hmm. are not there who will go for a defeat. And once they realize that no, the weather is not right, they will not go on war. Okay. क्योंकि Right. वो जाते थे हाथियों पर, घोड़ों पर, और बारिश के बाद जमीन नर्म हो जाती थी, घोड़ों के पैर धंस जाते थे, हाथी के पैर धंस जाते थे. They wouldn't have been able to walk a little distance even. So it was wise for them not to go for on war during monsoon. Right. Monsoon could not stop the wine and war. Yes, there are no rules, but I think they avoided going to war in the monsoon, which makes sense. You know, it's like बारूद को जलाना भी इस और मौसम में हाथी मुश्किल है. हाथी बेचारे अंदर ही धंस जाते और घोड़े भी धंस जाते. जी They जी, be able that's to gallop, no? absolutely. I think that is it. Okay, भावना. Okay, एक second. हाँ, आपका भावना का एक सवाल है. भावना, would you want to turn your mic on and ask the question? Hi, Bhavna. Hi, Salam Appa. Okay, this is not a question, but I wanted to tell you कि आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी है. मैंने अभी आपसे बात करते करते अपनी मम्मी को आपकी फोटो भेजी और मेरी मम्मी का मैसेज आया, ये तो मैं ही हूँ. So I wanted to tell you that it's lovely talking to you and आपको देख के बस मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई because मैं सिडनी में हूँ, रात के 11 बजे यहाँ पे, और मैं भी मुगलों की तरह काफी एंजॉय कर रही. So चाय नहीं कुछ और. बट और Actually, मुझे वाइन वाइन का चश्मा नहीं लगा, बट आप बिल्कुल मम्मी के जैसे दिखते हो. So I had to tell you. good to have a daughter like you. Sounds sweet. Thanks for sharing that, Bhavna. That's really, really very sweet. And I know you're far away from home. But talking about wines, Appa, there's one question from Meenu. She's asking, since they were so fond of drinking, were there any specific alcohol types that were reserved only for special occasions? The most treasured drinks. ऐसा कुछ लिखा है ऐसी? They used to have, see, Akbar used to be more of a fiend. मगर शराब भी पीता था, और हिंदुस्तान में तब शराब तो बनती नहीं थी, वाइन बनती नहीं थी. वाइन जो थी वो ईरान से आती थी. They used to import it from there. And यहाँ पर वो अफीन खाते थे. जहांगीर भी अफीन का इस्तेमाल करता था. और यहाँ पर बाद में वो फर्मेंटेड राइस का और महुआ वगैरह का अरक पीने लगे थे, मगर वो इतना पॉपुलर नहीं था. They were very fond of the wine which they used to get from Shiraz. It was a pure wine and they enjoyed that. But the Indian wines came into, though फिरोज शाह तुगलक ने इंडियन वाइन बनवानी शुरू की थी, मगर they were not very, very popular. They were, Indian wines were there, but they were not, I think, the cup of tea for the aristocrat Mughals. Okay, that's fascinating. It's very interesting that mahua and also rice, Yeah, fermented rice drinks. That's very Indian. Were being consumed by them. well, Yeah, interesting. But the best wine came from Shiraz. Shiraz, yeah. चलो, वहाँ से अभी अब शिराज से we have to get a wine. How did Mughals store their grains during the rain, Appa? How did they? I wish I was there. They used to, I think, महल हुआ करते थे भाई, जैसे कोठरियां होती थी, उनके किचन होते थे, किचन में भी जगह होती थी जहाँ पर ये ग्रेन जो थे वो अर्दन पॉट, बड़े बड़े जार होते थे मिट्टी के, जिनमें अनाज भरा जाता था और उसमें रखा जाता था. अगर आप अजाया की किताब पढ़ें तो उसमें जिक्र मिलता है कि इब्ने बतूता के सफरनामे में कि हाउ द ग्रेन वाज स्टोर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, which I won't be able to tell you offhand now, but he mentioned it. Okay. Okay. You have access to Achaya's book, please refer it. Huh. I have access to, I'm sure Sadaf also has access to his book. We'll look it up and share it. Yeah.
Okay. Now that was Sardar Fakhri Sawal. He said that was the last question he promised. So I think we're pretty much done. If no one else has to ask anything or say anything, we can close the session. I don't have I missed any questions? I'm just checking once quickly. I don't think I have missed anything, but if I have, please tell me. And हाँ बम्बी भी कह रहा है कि अच्छा हो गया दिन खत्म करो. Right. Okay. I think that is it. So thank you everyone. Thank you for being a part of this. Thank you for spending. Thank you. Thank I enjoyed your talk much more than it was very informative because I am not the mythology person and I don't know much of it. But I enjoyed listening to you and I got so much of knowledge out of it. Thank you so much. Thank you so much, and thank you for forgive my dog is barking away. Just 1 second. I think कोई आया है तो इसलिए वो भौंक रहा है. But yeah, thank you so much, everyone. I'm going to stop recording and end the session. And we hope to see you sometime soon, whenever we have the next session. Thank you. Okay. आपका जाते जाते एक सवाल है मीनू का. वो कह रही है प्लीज शेयर वन मस्ट विजिट प्लेस इन दिल्ली टू हैव मुगल फूड. आपके अगर कोई recommendations हैं, if there's any place you would suggest. You can go to see इस करीम का खाना तो बहुत खराब हो गया. Don't ever go there. But if you want to enjoy the Mughal food, you go to Kareem ka Dastarkhan hai in Islamic Center, Lodi Road. Islamic Center, Lodi Road, Kareem. That is a good. Okay, noting that down. I haven't been there. Lodi Road Islamic Center, वहाँ पे करीम का दस्तरखान, वहाँ पर जाइए. ठीक है. Thank you so much, Apa. And thank you everyone. Bye bye. See you next time. Bye. Thank you. Booking ticket to Delhi. Yes, एक बार चीजें ठीक हो जाए ना आपा, we all booking tickets to Delhi.